एक और दिन, एक और सीएसके की हार एंड आरसीबी के पिछले साल का डोमिनेंस कंटिन्यू हो ही रहा है, जहाँ पे दिस टीम इज़ नाउ लुकिंग रियली टू बिल्ड देयर लेगेसी, बिल्ड देयर एरा, जो एक टाइम पे हमने मुंबई इंडियंस या खुद सीएसके का देखा था वेयर दे कंसिस्टेंटली यूज्ड टू विन ट्रॉफीज एट टू सम एक्सटेंट केकेआर आल्सो यूज्ड टू डू दैट रियली वेल। वो वाला एरा जो है अब आरसीबी का आता हुआ लग रहा है एंड द वे दे हैव प्लेड इन दिस टू गेम्स, quality cricket, top fearless cricket, be it Virat Kohli, be it Rajat Patidar, be it Tim David, everyone is chipping in and in the bowling attack, everyone is contributing and that's how actually the champions play. एंड उसके अलावा वी ऑल्सो सॉ इन द डे कि कैसे ऋषभ पंत गॉट बैक इनटू फॉर्म। पंत ने बहुत अच्छा खेला। मोहम्मद शमी ऑल्सो रिमाइंडेड अस ऑफ द पास्ट एंड एलएसजी ऑल्सो गॉट देयर फर्स्ट पॉइंट्स। So good day for LSG and good day for RCB as well, and a lot to think for CSK. Three matches, three losses, and SRH gave a tough fight, but they still got a loss. And to talk about all these games, we have with us Jay, who is joining us for the first time at the Cricket Show with Sid. How are you, Jay? I'm doing good. Thanks a lot, Siddharth, for inviting me. Yeah, it's. I'm actually doing good. How about you? How are you doing? Yes, I'm also doing really well. Then we have some comments. The happiness of RCB fans cannot be digested. CSK's batting is trash. No, batting ही मुझे इनकी अच्छी लग रही है। मतलब कुछ अच्छा है अगर सीएसके में तो उनकी बैटिंग है। द बॉलिंग लुक्स वेरी ट्रैश। आपको क्या लगता है? Indeed, मेरे को भी यही लगता है कि उनका बैटिंग आई गेस इन टर्म्स ऑफ उनका टॉप ऑर्डर फायर करना बाकी है. Very very big like Sanju Samson has a huge pressure on him now at least to deliver in the next few games, otherwise it's going to be a bit more difficult when it comes to the qualification stages. So even the captain, because I saw the press conference, post match press conference given by Ruturaj, he said I take the blame on my shoulders, which obviously all captains do. So I think उनका top order fire करना बाकी है. In terms of bowling, yes, if you say in terms Tim David, like अगर वो उनका उसका एक chance ले लेते, which was I guess an illegal delivery, या इट वाज़ अ then नो बॉल। possibly वो yeah, अंशुल it was कंबोज a no वाला। ball. Yes, then एंड ऐसा लग रहा था possibly ही टूक इट ऑन हिज ईगो, जो बोल्ड वगैरह हो गया था उस टाइम पे। exactly, and then after that it was like colossal mammoth hitting and out of the park हुँ, and fabulous. Like Tim David was outstanding. It was his day, to येस। be honest, and yes, हाँ, that अरे what टिम costed डेविड us. लिटरली गॉट इनटू हिज ओन। शुरू में ही वाज़ अ बिट स्क्रैची बट देन ही जस्ट destroyed the bowling attack. Then, Perfect, 100%. then the one of the comments is CSK will win 3 games max this season. They will equal Delhi Daredevils of least wins. Again, मतलब won't लग deny. तो रहा है यार, मतलब क्योंकि Yeah, लास्ट ईयर भी बहुत खराब था एंड इस साल तो अभी तक जीत भी नहीं पाए हैं एंड दे हैव गॉट 3 losses ऑन द ट्रॉट एंड कुछ भी इनके फेवर में जाता हुआ नहीं लग रहा है एंड आज बैटिंग में लगा, मतलब एवरीवन वाज शोइंग इंटेंट बट नोबडी कुड कन्वर्ट और गो बिग एंड go बिल्ड big. दैट बिग पार्टनरशिप। It was only Sarfaraz Khan who showed a bit of intent, and then it was like Prashant Veer in the end, Jamie Overton. Obviously, these are bowlers, and Pratap Veer. I guess he could be like one of the replacements for Jadeja, and he wasn't bowled much in the game. So possibly, I think he should be given a bit of more on his shoulders. He should be given a bit of more bowling. He really did well in that one over where Krunal Pandya was bowling. I guess one, yeah. So yeah, that was one thing. But in terms of only saying three or four, I think CSK might go for 4 or 5 wins. What I think in terms of their batting lineup are doing well. Yes, bowling they need to be. Fleming and Co should be getting a bit more into it in terms of bowling. But I guess it could be more than 3 wins for sure. यस। एंड फ्रॉम व्हिच कंट्री इज द फेलो पैनलिस्ट फ्रॉम? ये एक कमेंट आया आपके लिए, इफ यू कैन आंसर दैट। आई मुझे भी पता है, आई कैन आल्सो टेल बट Okay, I am from India itself, but at the moment I am in London, but I am from India itself. Yeah. then CSK has good batters, but somehow the team is not gelling together. They need a character around which the team can rally around. Why they are literally missing MS Dhoni, the captain, the that calm face. वो पूरा चीज I think
after all of their legends are gone, I think they are just losing their way. Yeah, it's too much on MS Dhoni at the moment. If you say he's almost 43, 44, like in general. But again, I guess what they are missing is Ruturaj needs a bit more guidance into him. Obviously, only one man can give him that is MS Dhoni, and because of the injury, he has been missed a lot at the time. But if you say about batting, I don't think MS Dhoni might contribute that amount of runs in the batting because anyways he comes quite lower down the order. But yes, if in terms of mind, game, game management, yes, MS Dhoni, Hmm. वहाँ पे तो 100%. there is no Yeah, competition. yeah. Then CSK needs a proper overhaul next season. They need new captain, new bowling, new batting, basically built from scratch. See, यार ये तो अब again, मेगा ऑक्शन में yeah, ही हो पाएगा बट mega आई options. डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा सीएसके विल डू दैट दे विल बैक सम ऑफ देयर प्लेयर्स लाइक डेवॉल्ट ब्रेविस और ब्रेविस इज नॉट प्लेइंग बिकॉज ऑफ इंजरी Injury. बट फ्रॉम द नेक्स्ट गेम आई थिंक ब्रेविस विल बी अवेलेबल एंड बिकॉज क्योंकि अभी टाइम है उनके अगले गेम में सो आई थिंक दे विल गेट ब्रेविस बाय दैट टाइम सो ब्रेविस देन आपका ये Ruturaj Gaikwad and then maybe a Sanju Samson, they will be retained, is what I feel. 100%. Sanju Samson being obviously he has done so well for India in the recent months in terms of T20. So yeah, he is their prime batter for sure. And yes, Ruturaj will be 100% has to be retained because of his obviously playing for the India as well in one of the formats at least. And then there's one of their senior pros in Chennai Super Kings. I would say. And then I guess they have to build a lot good middle order as well, which can only, as you said, as you rightly said, it can be only possible in a very big mega auction. So Yes. yes, mega auction is the हाँ key तो for Chennai ओवरऑल Super तो Kings when चाहिए it यार comes. फिर भी एक तरीके से ना Overall, the chahiye, yeah. Overall, like Hmm. all three departments, yeah. Yes. The CSK owners needs to bring in the professionals to lift their team. Professionals as in I think the professional good need to bring in the professionals to lift the team. If the I think It could be a bit if more you can elaborated elaborate if on they're this. talking about statisticians or overall scouting network. I don't know what Acha, हाँ, the like that, but management. yeah, Okay, I guess I got it. management. Yeah. In terms Yeah. of management, I Yes, guess that's they what need they're to talking change that. about. Yeah, scouting network. I guess yeah, and they need to have more प्रशांत camps वीर before still before. showed good signs मतलब उसकी बैटिंग तो अच्छी लगी मुझे I but guess he needs to be. Yeah. he's not been used as a bowler. I think there are poor tactics as well. Why you not मतलब you're not giving the ball to him? वो चीज़ नहीं समझ आ रही. Then इसके बाद आपका ये and पिछले last match में भी he wasn't used as a bowler. This match also he wasn't used as a bowler. So this is one of the things which Ruturaj also has to see. The way he's using his bowlers, rotating his bowlers, that also looks a bit off. Of exactly. Then Yeah. As I said, Ruturaj is also not looking the same since last season. What has happened to him? हाँ मतलब today also he got a very good ball जहाँ पे उसने छक्का मारा but again a very soft dismissal अगली ball पे. exactly. Yeah, he rightly said in the press conference that he should have contributed big time in the top order, which I really Hmm. liked as a captain that he is taking everything and not just suggesting that we should have done this, we should have got more runs. But yes, he rightly said that मुझे परफॉर्म करना चाहिए था. It is my mistake that मैंने अपनी टीम को सपोर्ट नहीं किया, which is obviously a captain's responsibility to take on his shoulders. Hmm. So, but yes, Ruturaj has to step big now. Like in the next 3 or 4 games, if they lose at least two out of the next three, I guess almost the qualification difficult हो जाएगी उनके लिए. Hmm. Their lackluster approach in auctions is baffling. तो हाँ, मतलब ऑक्शंस में भी they spent a lot on this Kartik Sharma and Prashant Veer both and then they missed out on quite a few players like a Ravi Bishnoi they could have got. एंड देन अभी तो हम पिछले कुछ टाइम से ये देख रहे हैं कि जो भी सीएसके के रिजेक्ट्स हैं, वो बाकी टीम्स में जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं. अच्छा परफॉर्म कर Sameer रहे हैं Rizvi is one एग्जैक्टली. of them. Then your Tushar Deshpande also. Yesterday both Sameer Rizvi and Tushar Deshpande Where is owned the Tushar game. Deshpande? Oh, they won it for their respective sides. That is like Hmm. undoubtedly. तो Yeah. कहीं न कहीं सीएसके को तो बड़ी मतलब चोट सी लगी जा रही है. Then their lackluster approach की तो हमने कर ली. Writing could be on the wall for Fleming across all CSK franchisees.
He has won titles when Dhoni was there. Well, again, see, I'm not that into the coaching side of it, but yes, Fleming को बहुत ज़्यादा criticism मिल रहा है अभी, and there has to be something magical in the next few games, Hmm. tactically, in terms of coaching, in terms of getting young players also in that they need Fleming and co and all the staff needs to show something like the coaching department that they are behind the team and how they can change tactically and obviously in terms of statistics because now if you see I guess Chennai Super Kings first match तो इतना खराब था and next दो game 200 plus concede किया Hmm. है and that is obviously bowling department has to be sorted big time. Yes. ये तो है. Will this be finally the last season for Dhoni? I think he will take a mentor role next season. 100%. मुझे तो लग रहा है धोनी will just come for the final game. जितना मुझे अब लग रहा है कि he might just play the last game that is on 21st May versus GT. That's in Chennai. So there's a huge possibility कि धोनी का वो last game मतलब धोनी will play that game only this season. uh, Or do you have any different opinion? एट द मोमेंट मुझे एक्चुअली लग रहा था कि वो शायद नेक्स्ट सीजन भी खेल लेंगे बट जैसे उनका आया न्यूज दैट ही इज गॉट अ काफ स्ट्रेन एंड ही विल बी मिसिंग 6 or 7 games in the IPL. That was the news that was obviously given by the experts that he might miss, but I think it's going to be more than half a season. And if अगर वो more than half a season miss कर रहे हैं, then I guess it's the right time to call it a day in terms of professional cricket. But I guess Chennai Super Kings might miss him big time on field in the next few years. But again, if अगर वो mentor जैसे रहेंगे team के साथ, which obviously I guess he is going to be, then that's another one big asset for them in the dressing room and a boost. Yeah. Yeah. So, professionals for strategy, talent and planning. Yeah, I got it. I think आप management की बात कर रहे थे. Then Right. Rolex is saying Stephen Fleming doesn't understand anything. CSK should remove him next year. Yeah, that's what we were talking about. Yeah. So हाँ वो दिख रहा है मतलब I think Stephen Fleming with Dhoni only and Dhoni only running things from many years तभी ये team successful थी. And the way Dhoni Exactly. used to lead, plus he used to have that good trio of spinners every time, be it Dhoni, be it Jadeja, Ashwin when they were in their prime, and but then you had your then in spinners they had Imran Tahir, उसके बाद and उसके Fantastic. Yeah. yeah, so they always had very good options in spin, even till last year. So and नूर अहमद का फॉर्म बिल्कुल चला गया है, प्रशांत वीर को दे आर नॉट यूजिंग, राहुल चहर प्लेड 1 गेम, तो स्पिन में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है एकदम से। In terms of unka spinning, I guess Prashant Veer ko और use करना चाहिए and give Rahul Chahar a chance. Like he needs some consistency, consistent games to be showing up his skills. He is a very good bowler. ऐसा नहीं है कि आप राहुल चहर को एक गेम खिला दो देन ऑब्वियसली नेक्स्ट बिठा दो स्पिनर सी जैसे गेम इवॉल्व हुआ है क्रिकेट इट लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा बैट्समैन का गेम हो गया सो बॉलर्स हाँ थोड़ा मार खाएंगे शुरू शुरू में बट अगर आप उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे फॉर एग्जांपल अगर एक मैच में इतना खराब परफॉर्म किया फिर आप उनको बिठा ही दोगे कंप्लीटली एंड देन वापस आप उनको सिलेक्ट करोगे वो माइंडसेट नहीं होगा उनको ऐसा ही रहेगा कि अगर मैं वापस अच्छा नहीं करूंगा मेरे को नेक्स्ट गेम वापस निकाल देंगे थोड़ा कंसिस्टेंसी देना चाहिए बिकॉज राहुल चाहर प्रीवियस जो उनके फ्रेंचाइजी है उसमें भी काफी डिसेंट किया है ऐसा नहीं बोलूंगा ब्रिलियंट या आउटस्टैंडिंग बट आज आपने भी बोला है कि राहुल चाहर को एक गेम खिला के बिठा दे आई गेस राहुल चाहर शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज इन फ्यू गेम्स ही इज अ सीनियर प्रो. हम्म, यस। स्टीफन फ्लेमिंग ओल्ड क्रिकेट माइंडसेट, हाँ थोड़ा पुराना माइंडसेट तो लग ही रहा है सीएसके का। मतलब अगर हम उसमें बात करें बट आई थिंक वन पॉजिटिव साइड फॉर देम इज देयर बैटिंग, दे हैव गॉट 2 कंसेक्यूटिव 200 प्लस स्कोर्स 2 गेम्स में, तो आई थिंक वो एक थोड़ा पॉजिटिव इसमें लेंगे कि दे सम वन ऑफ देयर प्लेयर्स क्लिक इन देयर बैटिंग एंड व्हिच मेक्स देम अ गुड बैटिंग यूनिट एंड ये इस टीम की वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स थी। बट द bowling is getting exposed big time because Matt बिग Henry is टाइम बिग leaking टाइम. runs। देन आपका ये स्पिन का तो हमने बात कर ही ली क्या हो रहा है। एंड खलील अहमद उनके बहुत अच्छे बॉलर है.
Khalil Ahmed is a very good bowler. बट आप ये देखो ना, मतलब दैट टीम हैज खलील अहमद एज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, सो Frank. वो दैट इज द क्वालिटी डिफरेंस ना, कि उनकी बॉलिंग में क्या क्वालिटी है. And Matt Henry, even though he's a proven player at the international level, at the world level, we can see that. But वो उनका थोड़ा बहुत हम देख ही रहे थे कि जो T20 वर्ल्ड कप में भी he was both very good and very on and off. But वो ये he is also getting smacked for runs. Yeah, true. And Jamie Overton is Well one agreed. positive for CSK. अभी तक जितना भी सीजन हुआ है. Ev- वो बैटिंग में भी काफी अच्छा कर रहे हैं. So Hmm. he's contributing in both aspects. So yeah, one of the finest English, I would say now, all-rounders in terms of obviously in England he's not been used much as an all-rounder, obviously as a bowler, but again he can do decent in both departments. Agreed. Then one thing I wanted to talk about is कि अब जेमी ओवर्टन की वजह से ही आप 127 तक पहुंचे थे इन द फर्स्ट गेम वर्सेस राजस्थान, एंड आज भी ही Exactly. प्लेड दैट नॉक ऑफ 37 ऑफ 16 एंड ही टुक वन और टू विकेट्स. एंड डू यू थिंक कि अगर टिम डेविड आउट हो जाता, उस पे वो नो बॉल नहीं होती, तो मे बी सीएसके वुड हैव won this game or come very close? Yeah, that innings obviously everyone the commentators saying that innings took away the game. But yes, I guess जैसा सीएसके का स्टार्ट नहीं था, बट अगेन अगर टिम डेविड वो टाइम आउट हो जाते एंड शायद उतने रन्स नहीं बनते, they would have actually gone closer to the target or even won it. Hmm. Because वो ही एक इनिंग्स है जो डिफरेंस कर गई है. So yes, like Tim David's wicket would have been a game changer for CSK today. Yes. Sanju Samson is not getting his act together. How is he batting? हाँ, मतलब क्या हो गया, बिकॉज़ अभी वर्ल्ड कप ड्रीम रन था वर्ल्ड कप में, देन उसके बाद अब एकदम से, मतलब जब लोगों को फिर उम्मीद हो गई, अब लगा कि भाई, बिकॉज़ एवरीवन थॉट दैट नाउ सीएसके विल डू वेरी वेल बिकॉज़ ऑफ संजू सैमसन्स अमेजिंग फॉर्म, एंड शिवम दुबे तो था ही. तो हर किसी को लग रहा था कि अब बिकॉज़ दे आर इन सच गुड फॉर्म, दे आर वर्ल्ड कप विनर्स नाउ, दे विल डू रियली वेल, एंड इम्पैक्ट दोनों का बहुत था वर्ल्ड कप में. सो बिल्कुल. उसके बावजूद आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग नाउ, एंड Samson is not getting his act together. पता नहीं क्या हो रहा है. Even I am not able to understand. He's having that problem again of मतलब getting just one good innings and not doing well for the next few matches. But अभी तक तो वो एक innings भी नहीं है. अभी तो एक इनिंग भी नहीं आई है उनकी. वेरी क्वालिटी बैट्समैन नो डाउट. जैसे इंडिया के लिए खेले वैसे नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं सैडली. सबको लगा था इज गोइंग टू लाइक बी वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स टू बी ऑनेस्ट. जैसे उनका T20 वर्ल्ड कप का फॉर्म था ओवर द लास्ट 3 गेम्स फॉर इंडिया. But again, can't understand what's happening with Samsung. You know, I don't want to comment in a negative way as well, but I think he has full potential. And if he doesn't perform in the next 3 games, अगर उनका टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा है, Sanju Samson and Ruturaj Gaikwad both have to perform. But if it's Sanju Samson is not going, I guess, like a very brutal. I wouldn't say brutal to myself, but शायद उनको like drop भी नहीं कर सकते. That's the thing. They don't have a recognized wicket keeper again until Dhoni comes back. But I guess he needs to perform Karthik because he Sharma is is a the wicket senior pro keeper in the team. Wicket keeper, yeah. and But Urvil again, Patel है फिर. so, Urvil Patel hai. So obviously not big names, but I guess Sanju Samson needs to perform. He senior pro hai, and he has to show Hmm. the responsibility. Otherwise, it's only downhill for CSK. Yes. Because as I said, top order nahi chal raha unka, which is very very worrying at the moment. Yeah. And then supporting Iran or USA, पता नहीं कौन है who's asking this. अच्छा, Let's they are talking not our about that domain. world war. फिर Yeah, not our domain. I can't help it. will Sorry. Brevis come in the next match? हाँ, I think he will. That because अब next match है RCB CSK का on 11th versus DC in Chepauk. तो I think 11th को है, तो तब तक तो Brevis will make it and he should Yeah, play that possibly. game. I guess I don't know. I would love to ask you this question, Siddharth. Do you think he's going to make like even I think Previs will come in, but do you think he's going to be the full or an impact player? मतलब will he create an impact or not? No, no, no. वो फुल मैच खेलेंगे या इम्पैक्ट के जैसे बिकॉज अगर इंजरी से आ रहे हैं अच्छा, ही विल नॉट पुश okay. द प्लेयर अंडर या वैसे. That is a good catch. I think मुझे लगता है कि
नो, आई थिंक ही विल प्ले द फुल गेम इफ ही इज़ फिट फुल गेम? बट अगर फिर भी कुछ लगा कि छोटा-मोटा इंजरी का स्केयर है तो मे बी इम्पैक्ट में यूज़ हो जाए बट आई डोंट इम्पैक्ट में है। फ़ील कि अगर फुली फिट है तो भी इम्पैक्ट में यूज़ होगा, देन ही विल प्ले इन द ओरिजिनल 11। तो ये ट्रू। तो हमने बात कर ली, देन आई थिंक सीएसके के बॉलिंग अटैक में काफ़ी इनएक्सपीरियंस भी है बिकॉज़ अंशुल कंबोज, खलील अहमद फिर नूर अहमद का लास्ट सीज़न बहुत अच्छा था आईपीएल का। But then उसके बाद से he had a very rough T20 World Cup as well and now he's having a very rough IPL as well. तो वो बहुत उससे या फ़र्क पड़ रहा है। अफेक्ट होता है एग्जैक्टली या। हुँ। So you according to you, who CSK is playing 11 better than the current team? क्या मतलब हुआ इसका? मुझे नहीं समझ आई मुझे भी नहीं आया। सीएसके प्लेइंग 11 बेटर देन द करंट टीम। हुँ। नंदीश शेडगे कह रहे हैं, अगेन आर यू द प्रोड्यूसर ऑफ रामायण? नहीं यार। नहीं यार, इतने पैसे होते तो यार यहाँ थोड़ा रहते। अगेन बिल्कुल। ट्रू। ओके सो अब टॉकिंग अबाउट दिस गेम अभी तो इस टीम में जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल की बैटिंग नहीं आई थी एंड अभी तो वो भी बचे हुए थे आने। सो आई थिंक स्टिल दे कुड हैव डन रियली वेल बिकॉज़ टिम डेविड आउट भी हो जाता वहाँ तो रोमारियो शेफर्ड आता नेक्स्ट जो मुझे लगता है। ओह ट्रू 100%। एंड व्हाट ही डिड लास्ट टाइम वर्सेस सीएसके वी ऑल रिमेंबर खलील अहमद को ही स्मैश 32-33 रन। 32 या इन एंड ओवर यस। तो मतलब ही कुड हैव लिटरली चेंज्ड द गेम अगेन एंड आई थिंक आरसीबी को जो स्टार्ट मिल ही गया था शुरू के 3 ओवर्स में दे वर लाइक यू नो अ बिट मतलब वो दे वर ट्राइंग फॉर रन्स बट फिर वन्स एवरीवन गॉट इन वो रन लगने शुरू हो गए या एंड कोहली की कैच छूट गई थी शुरू में हाँ जी। बट उसके बाद बट इट डिड नॉट ही कॉस्ट देम आल्सो बिग लाइक सो प्लेड या अ गुड कैमियो इज व्हाट आई फील या आई गेस ही प्लेड अ सेकंड fiddle to Phil Salt because Phil Salt was just going bizarre and And then Phil Salt also did really well today. So आरसीबी की yeah जो स्ट्रेंथ है 100%। आई थिंक इट्स देयर ओवरसीज स्कोर इज एंड ओवरसीज प्लेयर्स आर performing really well. Jacob Duffy also took 2-3 wickets today. Exactly, he's been good as well। Hmm. So do you And think कि spinners भी अच्छा if you हाँ see sorry yeah हाँ spinners में भी Suyash also was if not giving runs. Suresh Sharma I was about to say exactly Hmm. Suresh was an impact player he came on did really well in Hmm. his 4 And overs so देवदत्त yeah पडिक्कल यार really good मतलब and he also पहले मैच में भी और अब भी he was just amazing. he's performing very well yeah Padikkal And the team is very good। not playing वेंकटेश अय्यर अभी तो वेंकटेश अय्यर का भी चांस नहीं आ रहा। तो मतलब अभी ये उनके भी है करंट कि अभी सेटअप भी में टीम में बहुत कितनी मुश्किल है कि क्वालिटी है। किसको बिठाएंगे। क्वालिटी है एग्जैक्टली किसको बिठाएंगे वेंकटेश अय्यर के लिए बिकॉज इफ यू सी लास्ट सीजन what happened with Venkatesh Iyer, like personally has actually affected him a bit. And obviously RCB giving him the chance and getting him in the auction. हुँ, And obviously at the moment I don't think Venkatesh Iyer possible के आएंगे टीम में। Only few other players जिनका अगर flop performances हुआ then only he can get into the team. But again Venkatesh is a quality player. It's just that last season उनको price tag काफी pressure आ गया था। हुँ, What I think. बिल्कुल, Yeah. ये तो मुझे भी लगता है। एंड दूसरी चीज़ डू यू थिंक कि आरसीबी का ये एरा आ सकता है जैसे वी हैड सीन द एरा ऑफ एमआई, सीएसके और समथिंग लाइक अ केकेआर? Um, with MI, CSK and KKR era, I don't think मुझे नहीं लगता कि आरसीबी का वैसा एरा आएगा बिकॉज सब डिपेंड होगा उनके अवे गेम्स के लिए भी। यस लास्ट सीजन हुँ, उनका जो परफॉर्मेंस था लास्ट सीज़न तो दे हैड और दैट स्टार्टिंग के 100% होम रिकॉर्ड, अवे रिकॉर्ड। 100% विथ हिम यस 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 बिल्कुल बिल्कुल। अगेन इफ अवे में वो लोग कंसिस्टेंट रहे आई गेस नेक्स्ट 3-4 सीजन तो आई गेस आरसीबी कैन हुँ, हैव अ दिस रियली साइकिल दे रियली विल डू गुड वेल। एरा। एक ट्रॉफी तो आ गई या इस साइकिल में, but I think they can build on जी this core and do really well in the coming seasons as well. बिल्कुल या एंड इन द बहुत ही कमिंग सीजन चांसलेस खेल रही है आरसीबी मतलब जो मुझे लग रहा है कि एवरीवन इज मतलब इतना ज़्यादा हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, हर कोई अच्छा कर रहा है, दैट सुपरस्टार कल्चर इज गॉन फ्रॉम दिस टीम। फिर जैसे वो गेल, कोहली, एबीडी पे सब रहता था। देन मतलब उस या टाइम बैटिंग ही अच्छी रहती थी, बॉलर्स थे ही नहीं आरसीबी के पास। इफ वी अगर आप देखोगे सुपरस्टार इन लाइक आरसीबी आई थिंक एट द मोमेंट खाली विराट कोहली ही है। उसके बाद यू कांट कॉल फिल सॉल्ट अ सुपरस्टार। यस वेरी गुड प्लेयर वेरी गुड प्लेयर
can't call superstar. Again, Rajat Patidar, not a superstar. So, वो लोग actually वो era से move करके, young team, हम्म। तभी not ये टीम many, अब अच्छा obviously कर रही है ना, Bhuvneshwar पहले Kumar है, इनका yeah. बहुत ज्यादा Exactly, yeah. सुपरस्टार्स और बड़े प्लेयर्स पे रहता था, तभी अभी वो इनकी प्रॉब्लम भी रहती थी। रिलायबिलिटी या इनके रिलायबिलिटी हर प्लेयर के ऊपर आ गई है। इट्स नॉट दैट कि ये तीन ही करेंगे, इट्स ओनली कोहली, डिविलियर्स और गेल। नहीं, अभी सब 11 को इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एंड देन रिलायबिलिटी एज वेल। सो अभी खाली तीन प्लेयरों के ऊपर नहीं है जैसे होती थी ऑल। हमेशा ऐसा होता था आरसीबी का कि आरसीबी का ऑब्वियसली बॉलिंग नहीं होती थी इतनी ग्रेट, तो बैटिंग पे डिपेंड। इफ यू सी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों हो गई है बेटर आरसीबी। हम्म। यही आई थिंक रीजन है, एंड आई थिंक क्रेडिट शुड गो टू द मैनेजमेंट एज वेल। दिनेश कार्तिक, देन आपका ये आप दिनेश कार्तिक वाज देयर, देन योर एंडी फ्लावर, Mo Bobat, they also deserve a lot of credit. 100%। And yeah, so we have spoken about RCB versus CSK, काफी बात हो गई है. Now we should move on to the game जो दिन में हुआ था. It was SRH versus LSG, and LSG got their first points in Hyderabad. And एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच ही चल रहा है, because I was following. It was 33-34 for 4 at in 9 overs, SRH का. Then उसके बाद it was फॉर हाँ, एसआरएच। yes. एंड देन शमी वाज इन हिज फुल फ्लो. ऐसे ही लग रहा था वो टेस्ट मैच की डे वन पे रेड बॉल से डाल रहा है, और उसको वही स्विंग मिल रही है, वही सीम मिल रही है, एंड ही वाज जस्ट मेकिंग एक्सप्लॉइटिंग द कंडीशंस. वैसे ही वाला एक फील आ रही थी शमी को देख के, एंड ही इज आल्सो गिविंग आई थिंक अ एग्जैक्टली। स्टेटमेंट कि ही शुड बी इग्नोर्ड फॉर द वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर, ओडीआई वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर. मोहम्मद शमी इन ओडीआई वर्ल्ड कप, सी अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो ऑब्वियसली यस। बट बट ऑब्वियसली फिर एज सिलेक्टर्स हैव फैक्टर भी आ डिफरेंट जाता है, फिटनेस भी परफॉर्मेंस आ जाती टूवर्ड्स है, इट। या ऑप्शंस भी आ एग्जैक्टली, जाते हैं. फिटनेस भी आ जाती है बिकॉज देन इफ यू गो नाउ इट्स साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप, तो वहां पे Because you आई have गेस now a शमी विल Harshit बी अ Rana as well, वेरी जिसने वेरी अच्छा भी क्रिटिकल। किया है in the ODI format. So Harshit Rana, because he's scoring well with the bat, he was doing really well with the bat, and उसके बाद फिर he was taking wickets as well. So Harshit Rana अभी तक तो ऐसा ही लग एग्जैक्टली। रहा है he has taken that spot. But I think शमी बहुत अच्छे रिदम में लग रहे हैं. Last year he also played for SRH, but वो रिदम बिल्कुल नहीं था. तो इस बार मतलब अलग ही रिदम में मोहम्मद शमी इज लुकिंग, एंड आई थिंक वो काफी फ्रेश लग रहे हैं फ्रॉम द लास्ट टाइम. सो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर हिज करियर. And Shami has had a very very fantastic Ranji Trophy as well. If you see domestic cricket, उन्होंने बहुत अच्छा perform किया and he has proved himself. But again, जो इंडिया का कोचिंग डिपार्टमेंट है, they are also looking at players with decent amount of age, fitness, long term capability. They are just building for the future. So that's why they have always given the answer, like in terms of Shami, that वो लोग हमेशा देख रहे हैं कि players with less age and more impact over the years. So they have India. I guess India is also building a team for the future. But yeah, अगर personally आप पूछेंगे, मोहम्मद शमी as a clutch bowler, fantastic. Need him, but obviously let's see how it goes about in the next year as well. बट शमी के बारे में आप क्या कहोगे? हाउ गुड इज इट टू सी हिम लाइक दिस? Yeah, he's जैसे आपने कहा कि day one pitch जैसे डाल रहे हैं टेस्ट में, but very have like I guess it's 2 wickets for 9 runs in 4 overs, which is like यस, यस. what that is. Oh, that is like fantastic. You're getting Abhishek Sharma as well. You're getting Travis Head as well. Like you're getting the two clutch batsmen. That's it. They were half paralyzed as well. Like And आज तो SRH. Klassen But he kept and the other Nitish team Reddy. Nitish Reddy is also coming into form, which is a very good sign for into SRH. form. And he's giving He was all-round really well in the performances. last game. Last game he was the man of the He match was really well. against KKR. KKR, exactly. So, and So now today as again, well, I think he was amazing with the bat along with Klassen. तभी वो 150 भी क्रॉस I हो guess गया. I guess the last ODI Nitesh Reddy played versus New Zealand. Obviously, India lost that series हाँ. back home, but I guess he scored There 50 also plus he runs. scored a 50. So 50 exactly. Yeah, he scored 50 plus runs. So yeah, again, very. So that's how it is. With Nitesh Reddy, it's like
batting, bowling both. So that is like a Mm. fourth option in terms of pace bowling for India. Obviously, it is at the moment it is Bumrah, Siraj, and Harshit Rana. Then obviously you go to Nitesh Reddy as a fourth pacer again. So काफी अच्छा Nitesh Reddy. I guess he should at the moment. I think if he does well in the next 5-6 games, I guess he should be given a long run and few ODIs to see if he can fit the game, fit the match in the World Cup or not. Yes. So मुझे तो ये लग रहा है कि नितिश रेड्डी अगर if he continues this form, he also has a very very strong case for the 2027 World Cup and in the ODI scheme of things, and even T20 maybe he can be seen as a backup to somebody like a Shivam Dube, Hardik, and then T20 ODI में तो he can be a perfect backup for Hardik Pandya 100%. because Shivam Dube is not considered for the ODI format, so ODI you format. can use Nitish Reddy there. बिल्कुल ट्रू. एंड ही कैन बी ऑल्सो ट्राइड, तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर हो सकता है एंड नितिश रेड्डी शुड परफॉर्म, दैट विल बी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट एज़ वेल एंड क्लासन ऑल्सो। क्लासन का ये हो रहा था कि पिछले 2 मैचेस में ही हैड रन्स, ही हैड डिसेंट नॉक्स, बट ही वाज़ मतलब वो थोड़ा एंकर स्टाइल में खेल रहा था, ही वाज़ नॉट प्लेइंग इन दैट अग्रेसिव स्टाइल व्हिच ही यूज्ड टू प्ले, No, बट वो इसलिए exactly. भी है। Even in the last game, yeah. हाँ, so do you think वो इसलिए because he is retired from the international cricket and इसी वजह से that's the reason? I think उनका अप्रोच अभी ऐसा है कि that I want to be more on the crease. I want to see how I can develop my game, at least in franchise format. That I just don't want to be just hitting all the time. I want to see if I can now play an anchor role or just be there for the team, and then obviously go outstrike in the last few overs. So that's why I guess he has changed the game, which is 100% can be seen. ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती खेल रहे हैं उनसे नहीं हो रहा है. I think he is trying to make a different approach for himself at the moment. Hmm. Yes. So again, Lucknow's bowling is going well. Fast bowler spinner Kamal is not visible, and it is a matter of tension. Fast bowler Kamal कौन है? I'm not. Kamal, I mean, I'm not sure. Hmm. LSG का कोई But कमल हाँ, बॉलर था. LSG's bowling is definitely looking good. With शमी अच्छा कर रहा है तो वो अपने आप वहीं से अच्छी हो ही रही है. And then their domestic talent in the pace in the bowling department is good. You have your आई you गेस have a उन्होंने बोला है Mohsin, कि you have an लखनऊ की Avesh. बॉलिंग कमाल हो रही है. अच्छा, कमाल हो रही fast है, bowler कमाल नहीं, spinner कमाल हो Kamal. रही है. अच्छा, हाँ, कमाल हो maybe रही it. है. Yeah. Yeah, it might be that. Can CSK make a comeback? Uh, Uh, will depend यार yeah, बहुत it's चीजों पे. all three formats they have to do well in the next at least 5-6 games. And अभी Hmm. जैसे 3 losses हुए हैं, at least for the next 3 games they have to win all three to at least Yes. keep a 50% record in the IPL. Otherwise, if they lose any more, like out of 5 they lose 3 or 4, I guess Hmm. that is curtains. Like Hmm. because net अच्छा, run rate भी now I affect होगा got in the end. got it actually वो रामायण वाली जो बात चल रही थी because रामायण मूवी जो आ रही है रणबीर कपूर वाली उसमें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. उसका जो प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा, यू रिजेंबल हिम, तो इसलिए दे आर सेइंग कि दिस इज Oh, द is it? प्रोड्यूसर. Oh, okay, okay. No, 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 no. Right. Okay. काफी काफी लेट क्लिक हुआ ये चीज. No, no, no. I'm not Namit Malhotra. क्योंकि एक और किसी ने कमेंट किया है नमित मल्होत्रा लुक्स लाइक टुडेज गेस्ट. Okay. Right. I got it. या सो व्हेन आरसीबी कैन मेक इट टू प्लेऑफ्स इन 2024 आफ्टर लूजिंग 7 गेम्स, सीएसके कैन. यार वो वंस इन अ लाइफ टाइम मतलब वैसी चीजें होती है. एक बार मुंबई ने भी किया था इन 2014, जैसे द कोरी एंडरसन थिंग वी ऑल नो, बट उसके And बाद this is मतलब वो last ball नहीं, six from बहुत बहुत ही Aditya Tare. Yeah. मतलब कभी हो गया तो हो गया, एंड आरसीबी डिड दैट इन 24. तो आई थिंक वो बड़ा मुश्किल तो लगता है प्रैक्टिकली, बट देखो क्या होता है, एंड other Looks things difficult also for has to CSK go at in the your moment. favor. No. The absence of Hasaranga is Uh, going to make a big difference in spinning. If Lucknow had an Hasaranga, Lucknow would have not lost the first match as well. हाँ, फर्स्ट मैच में अगेंस्ट डीसी यार उन्होंने एकदम कोलैप्स करवा दिया था, बट उसके बाद फिर इट वाज इजी फॉर डीसी आफ्टर दैट. DC exactly. Yeah.
आई गेस वो वाले मैच में तो उनका लखनऊ का स्ट्रैटेजी पूरा रॉन्ग था। ऋषभ पंत इज़ नॉट एन ओपनर, उनको खुद भी आई नो ही इज़ अ कैप्टन बट आई डोंट थिंक ऋषभ पंत कैन प्ले एज़ एन ओपनर एट ऑल। एंड टॉकिंग अबाउट पंत लाइक यार, ही आज शुड बी अ ही मिडल। वाज गुड। आज उसने अच्छा आज तो खेला। यस, सी अगेन वो टॉप ऑफ द ऑर्डर नहीं खेले, ही केम वन डाउन एंड ही वाज जस्ट स्मैशिंग। हुँ, सो वो इंटेंट की बात होती है, ही इज़ नॉट एन इंटेंट एज़ एन ओपनर है, उनका गेम वैसा है ही नहीं। यस, मिडल ऑर्डर वन डाउन, obviously you can switch, but you can't switch every game, you just have open आ जाओ। Let Mitchell Marsh and Aiden Markram do, because they play for their respective countries as an opener. Let them go ahead. And then हुँ, obviously आप ऋषभ पंत जैसा क्वालिटी बैटर है तो he can always come in the middle order, or obviously one down जैसे आज आए हैं, and he has हुँ, just gone bizarre at the moment, and like हुँ, काफी अच्छा खेला आज पंत ने, he has shown a very responsible innings, हुँ। एंड एंड तक रह के जिताया, दैट वाज़ आल्सो वेरी गुड। एंड तक रह के जिताया। एग्जैक्टली। हुँ। एंड टॉकिंग अबाउट एसआरएच पोलिंग, वो बहुत वीक लग तो रही थी, बट आई थिंक दे आर स्टिल डूइंग डिसेंट, बिकॉज़ लास्ट मैच दे वॉन बिकॉज़ ऑफ देयर गुड बॉलिंग एज़ वेल। एंड गुड बॉलिंग आज एग्जैक्टली भी आज। दे पुश्ड एलएसजी अ लॉट इन दैट वेरी लोएस्ट इन अ वेरी मॉडेस्ट टोटल। या आज थोड़ा जयदेव उनादकट की बॉलिंग की थोड़ी लाइक लास्ट गेम ही वाज सुपरलेटिव बॉलर, एंड आज थोड़ा उन्होंने काफी मार खाया, ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हुँ, सो या जयदेव उनादकट एक काफी डिसेंट बॉलर है उनके लिए, इफ ही इज कंसिस्टेंट है तो बहुत बेटर। हुँ, येस। आई फील सीएसके शुड ब्रिंग ज़ैक फोक्स, अकील हुसैन, मुकेश चौधरी एक्सेट्रा। ज़ैक फोक्स तो नहीं यार, वो और ज़्यादा पिटेंगे। फिर फिटिंग अकील एग्जैक्टली है। हुसैन मे बी, बिकॉज़ ही कैन गिव यू गुड बैटिंग एज़ वेल। बैटिंग तो एज वेल, सो अकील हुसैन, अगर नूर कमेंटेटर्स अहमद लोग के एक आध कमेंटेटर्स मैच अच्छे डिस्कस नहीं जाते, और यू कैन बैक हिम फॉर 1 और 2 मोर गेम्स, बट इफ ही डज़न्ट डू या वेल, आप यू कैन ब्रिंग इन अकील हुसैन, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। 100% या। हाँ, मुकेश चौधरी तो नहीं यार, मतलब गुरजपनीत को ट्राई करो आप उससे बेटर, या अगेन because Gurjapneet was इफ नॉट good, मुकेश चौधरी, playing good गुरजन। domestic cricket as well. So and India के emerging Asia Cup में भी he was there. So Gurjapneet can be tried. Then हाँ, then SRH had actually made the match in 18th over, but Jaydev Unadkat. हाँ, they actually made the game. उनका वो spinner है शिवांग कुमार. He was bowling कुमार, well. शिवांग कुमार। Then Sanjeev Goenka मैंने तो said वही कहा Hasaranga कुछ could have been a match winner in Lucknow this year, but he got injured. अभी तो मयंक यादव इज़ येट टू कम। अभी तो आई थिंक आवेश इज़ आल्सो नॉट प्लेइंग वो भी आवेश एंड और मयंक यादव इज़ नॉट प्लेइंग। आवेश एंड मयंक यादव दोनों भी नहीं खेल रहे, एग्जैक्टली या। हाँ, एंड क्योंकि दो मतलब सी वो देखो, उसके बेंच बाद भी देखोगे तो दो अच्छे बॉलर है उन लोग के पास। हुँ, एंड ऑनरिक नौटिया आज नहीं खेले, ही वाज़ देयर इन द प्रीवियस गेम, बट इन द लास्ट गेम या। अभी हाँ, द ऐड उर्विल पटेल। हाँ यार, उर्विल पटेल भी है, बट देखते हैं, मे बी इन प्लेस ऑफ कार्तिक शर्मा ही कैन बी बॉट। वो देखने वाली बात होगी। सो हाँ, जी। so I think yes, LSG also got 2 points today. उनका भी they got the first win of the season and they will be happy with this performance. And their top 4 is already good. And some of the youngsters are clicking a bit. चाहे बदोनी की बात करें, समाद की बात करें. They are also doing really well. So LSG भी, if things go well for them, they can also be good contenders for that top 4 spot. But let's see how the things pan out. And Jay, now we'll move on to the tomorrow's game, which is KKR versus Punjab Kings. We'll take some predictions from you. So you are a KKR fan also, जहाँ तक मैं जानता हूँ. तो यस, बिल्कुल। तो आप भाई ये बताइए, कल आपको क्या लगता है दोनों टीम से एक्स फैक्टर्स कौन होने वाले हैं? एंड श्रेयस अय्यर इज अगेंस्ट यू Uh, गाइस. well, that's one haunting thing for us. We haven't retained एंड Shreyas लास्ट Iyer as a टाइम तो captain इतनी because अच्छी he was मेमोरीज so नहीं very थी good. केकेआर के लिए लास्ट 2 गेम्स में अगेंस्ट पंजाब, बिकॉज़ बिल्कुल, 95 बिल्कुल, ऑल या। आउट हो गए थे। they couldn't chase 110। फिर उससे पहले दे couldn't defend 260 रिमेंबर। प्लस वर्सेस पंजाब, तो वो एक थोड़ा चल रहा है अभी। अभी फिलहाल तो बॉलिंग इतनी पुअर है केकेआर की, ऑब्वियसली इंजरीज फॉर थ्री बॉलर्स हैज एक्चुअली बीन क्वाइट अ हुँ, contributing factor for KKR's bowling at the moment. तो
As आपने पूछा X factors for both teams. I guess Sunil Narine, if he bats up the order, what like I generally think he हाँ, should be स्टार्ट coming up बहुत the अच्छा order. किया था इन दैट Ajinkya एसआरएच Rahane at गेम। 3. या सो आई गेस जो सुनील नारायण की बैटिंग है वो खाली पावर प्ले में ही आ सकती है। वो हाँ। फर्स्ट 6 ओवर्स 4 ओवर्स जितना उन्होंने मारे, ही इज नॉट अ बैट्समैन के जो एंड में आके मारे वो आउट हो जाएंगे जो मारते मारते ऑब्वियसली, बिकॉज उनका गेम स्टाइल ही पावर प्ले के लिए बना है व्हाट आई थिंक उनका बैटिंग। हुँ। एंड इन टर्म्स ऑफ पंजाब आई थिंक इट्स ईडन गार्डन, आई गेस इट्स गोइंग टू बी युजवेंद्र चहल, हुँ। You mentioned who द from Punjab? वन ऑफ द की चहल इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। चहल, ओके। हुँ। या देन अब कमेंट्स जल्दी से ले लेते हैं। KKR need to win. I believe they can try जी। Allen and Seifert, Rahane at 3. Can it be possible? नो आई थिंक फिन एलन और टिम सेफर्ट में से एक ही खेलेगा। मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन देखो, आई वुड आल्सो वांट रोहमन पॉवेल टू कम इन, बट अगेन 4 ओवरसीज ही अलाउड है, सो इट्स ईदर गोइंग टू बी फिन एलन और टिम सेफर्ट। एट द मोमेंट लुक्स लाइक फिन एलन हुँ। दिस बिकॉज़ वो हाँ। कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। यस, कैमरन ग्रीन को भी खिलाना हाँ, है, सो कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स दैट्स हाउ काफ़ी इट हो इज। रही है एंड देन कैमरन ग्रीन पे व्हाट आर योर ओपिनियंस? मतलब ही आई थिंक ही गॉट गुड स्टार्ट इन दैट फर्स्ट एमआई वाला जो गेम था एंड देन वो जी, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया इन द सेकंड गेम। तो रन डू यू आउट हो थिंक गए। ही विल कम बिग वी सून? he can come back, obviously a very quality player for Australia हुँ, as well, if you see over the years. Again, उनको एक रोल देना चाहिए that you're going to go 2 down, you're number 4, you are number 4, you're just going to play that, or number 5, उनको एक you can't always like 1 down आ जाओ आप and then आप हुँ, ये टाइम पे आओ, because I guess first game वो 1 down आए and then उसके बाद उनको वापस 2 विकेट के बाद बुला लिया, and we हुँ। need his bowling as well. So let's see उनका थोड़ा जो बैक स्ट्रेन है कब तक 100% रिकवर होता है, and then he can cut loose in bowling as well. ओके एंड नाउ बहुत वेरी क्विकली यू कैन टेल मी कि कल आपको क्या लग रहा है विदाउट एनी बायस इज केकेआर गेटिंग देयर 2 पॉइंट्स? No, I think it's going to be Punjab Kings to win the game. ओके सो At the moment, लग रहा है weather will give us 1 point. What I think, because it's been raining in Calcutta for the whole day, I suppose today. So I was following a bit, but if the game happens, I think it's Punjab Kings. पंजाब ओके सो आई होप यार कुछ अच्छा हो फॉर केकेआर सीएसके जीटी दे हैवंट वॉन अ सिंगल गेम येट। Hopefully, बाकी आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड सीजन गोइंग ऑन काफी अच्छा आईपीएल जा रहा है एंड आई होप कि आप सब लोग एंजॉय करें जस्ट लाइक वी आर डूइंग एंड दिस आईपीएल सीजन brings us a lot of excitement and a lot of talent as well. So thank you so much Jay for joining in. I hope you had a good time thank you, on sir. my show. Fantastic. Thank you so much for inviting. Thank you, sir. Yeah. Yeah. And प्लेजर एंड जितने भी लोग यार आज आए प्लीज एज ऑलवेज आपको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है टू द क्रिकेट शो विद सिड एंड जस्ट कीप फॉलोइंग मी एट द आईपीएल वेयर आई मीट यू लाइव एवरी डे आफ्टर एवरी गेम डे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। Thank you. Good night. Thank you. गुड नाइट।